दीपक जी से रिक्वेस्ट करेंगे स्क्रीन के लिए। इतिवुत्तक 102 चतुक्क निपात ब्राह्मण धर्म यागवग आसवक्षय सूत्र वुत्तय्य हेतं भगवता वुत्तम अर्हताति मे सुतं जानतोऽहं भिक्खवे पश्यतो आसवानं हयं वदामि यो अजानतो नो अपश्यतो फिर से पढ़ता हूँ। जानतोऽहं भिक्खवे पश्यतो आसवानं खयं वदामि नो अजानतो नो अपश्यतो किंच भिक्खवे जानतो किं पश्यतो आसवानं खयो होति इदं दुःखन्ति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयो होति अयं दुःख समुदयोति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयो होति अयं दुःख निरोधोति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयो होति अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदाति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयो होति एवं खो भिक्खवे जानतो एवं पश्यतो आसवानं खयो होतीति एतम् अर्थं भगवा अवोच तथ्येतं इति उच्यते शेखस्य सिक्खमानस्य उजुमग्गानुसारिणो कयस्मिन् पठमं ज्ञानं ततो अඤ्ञा अनन्तरा ततो अඤ्ञा विमुक्तस्य विमुक्तियानम् उत्तमम् उपपज्यति खयेयानं क्षीणासंयोजना इति न त्वयिदं कुशीतेन बालेन विजानतः बालेनं विजानतः निब्बानं अधिगन्तव्यं सब्बगन्थप्पमोचनं थी अयम्पि अथो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति। सर भगवान ने कहा, आनंद ने कहा, भिक्षु वासों का क्षय उसके लिए कहता हूँ जो जानता है और देखता है, उसके लिए नहीं जो नहीं जानता और नहीं देखता। भिक्षु क्या जानता है और क्या देखता है, जिससे आंसू में क्षय होता है। ये दुख है भिक्षु, ये दुख है जो उसको जानता है और ठीक से देखता है, उसी के लिए आंसुओं का क्षय होता है। ये दुख का समुदय है, ये दुख का निरोध है, ये दुख के निरोध की प्रतिपदा है। भिक्षु जो ये सब जानता है और देखता है, उसके लिए ही आंसुओं का क्षय होता है। इस अर्थ से मैंने ये कहा था कि जो जानता है और देखता है, उसी के लिए आंसुओं का क्षय होता है। भगवान ने ऐसा कहा और इसके ऊपर फिर आगे कहा, जैसे कि एक सीखने वाला सीधे रास्ते पर भी चलता है, तो पहले प्रथम ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ये अक्षर आसंख्यान है और उसके बाद ही उसमें इसी जीवन में वो मुक्ति हो जाती है ऐसे। और तो वो इस तरह से प्रज्ञा के द्वारा विमुक्त हुआ, जिसमें मुक्ति का ज्ञान जागता है और उसके जो उपजता है उसके क्षय को जानता है, तो सारे संयोजन समाप्त हो जाते हैं। ये किसी आलसी के नहीं हो पाता, ना ही मूर्खों के समझ में आता है।
कि निब्बान किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से सभी ग्रंथियों से विमुक्त हो सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना। It was said by the Buddha, the perfected one, this is what I heard. Mendicants, I say the ending of defilement is for one who knows and sees, not for who does not know or see. For the one who knows and sees what? The ending of defilement is for the one who knows and sees suffering, its origin, its cessation, and the path. The ending of defilement is for the one who knows and sees this. The Buddha spoke this matter. On this it is said, as a trainee trains, following the straight road, first they know about ending, enlightenment follows in the same lifetime. Then to one freed through enlightenment, the knowledge of ending arises, the supreme knowledge of freedom with the ending of the fetters. This is not for the lazy, the fools don't understand. Extinguishment is realized with release from all ties. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. सर इसमें खय अस्मिन् पठमम यानम ततो अय्या अनंतरा। क्षय हो गया है, ये पहले ज्ञान हो जाता है, उसके बाद अ, अय्या मतलब विद्या अनंतरा। अन्य प्रकार के दूसरे सो इज इट लाइक जो हम लोग भिक्षुओं के लिए पढ़ते हैं कि उनकी पहले पय्या विमुक्ति होती है और फिर वो बाद में रियलाइजेशन की ओर जाते हैं, जैसा कई सूत्रों में लिखा रहता है कि फर्स्ट दे नो बाय एक्चुअली अनंतरा का लिटरल ट्रांसलेशन जो है विदाउट एनी गैप है, क्या बोला? अनंतर बच्चे और समानांतर बच्चे। It doesn't mean really it follows later. इस सेंस में देखा जाए तो it follows immediately, ऐसा होना चाहिए। One can interpret it differently. And फिर अगला 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 पैरा सर क्या लिखा है फिर मतलब क्योंकि मेरे को वो सूत्र एक किसी सूत्र में है जिसमें भिक्षु लोग ये बताते हैं कि अनंत लक्षण सूत्र है, जैसे उसके आधार पर और अदिति पर्याय सूत्र के आधार पर उनको यान विमुक्ति हो गई है कि एवरीथिंग इज फाइव खंडास एंड इंटरेक्शन। सो प्रोबली दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि पठवम यानम ये होता है, लेकिन फिर उसको रियलाइजेशंस के टर्म में पूरा उतार लेना, वो सेकंड लाइन लिखी है। यार इस इंग्लिश ट्रांसलेशन से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर आप अनंतर शब्द का लिटरल अर्थ देखें तो उसमें कोई अंतर नहीं है उसमें। हमने जैसे अभिधम्म में पढ़ा था ना, त्रिपिटक में अनंतर बच्चे और समानंतर बच्चे। अनंतर मीन्स in just next moment, without any gap, without any difference. ओके So it can interpret anything. It doesn't matter. और ये अय्याई वर्ड यूज होता है ना सर, जिसमें पहले स्थिति में उनको अपने पुराने लाइफ टाइम का पता चलता है, फिर दूसरे के लाइफ टाइम का पता चलता है, वो अय्या ही वर्ड है ना, सिद्धि जो प्राप्त होती थी इसमें।
वो शब्द अविन्या है ओ एक्चुअली। ओ ओ ओके ओके, हाँ ठीक है सर, वो मिक्स हो रहा था। ठीक है, ऑलराइट, यस। अन्या इज प्योर विजडम, एनलाइटमेंट। Basically, this is it, knowing the following four eightfold path, following and completing the understanding of Four Noble Truths, you get to reach. That is, बाकी सब are matters of detail. Again, a slight difference, जिस समय वगैरह आगे बताएंगे, but basically तो वही बता रहे हैं, या चार आधे सत्यों को ठीक से रियलाइज करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ओके सर। ऐसा लगता है। विमुक्ति सर, सेकंड पैराग्राफ में विमुक्ति यानम उत्तमं। This is especially, this means the knowledge that I am freed arises. That is the अभिन्या, you can say third अभिन्या, जो कि आनंद में जाती है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, मेरे क्षय सब मेरे आसव समाप्त हो गए हैं। मुक्ति ज्ञानम उत्तम, सुप्रीम नॉलेज। जो कि क्षय के ज्ञान से और संयोजनों के अंत से उत्पन्न होती है। राइट सर, राइट सर। क्योंकि यही सेम वर्ड आदित्य पर्याय सूत्र में भी शायद यूज किया गया है, विमुक्ति यानम होती लास्ट में। इम्प्लीकेशन कोई है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ आनंद की मुक्ति की बात आती है, ये शब्द नहीं आता है, मुक्ति में आनंद। यस सर। समण ब्राह्मण सुत्त। वुत्तयहेतं भगवता उत्तम अर्हताति मे सुतं। ये हि केचि भिक्खवे समणा वा ब्राह्मणा वा इदं दुःखन्ति यथा भूतं न प्रजानन्ति। अयं दुःखसमुदयोति यथा भूतं न प्रजानन्ति। अयं दुःखनिरोधोति यथा भूतं न प्रजानन्ति। अयं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदाति यथा भूतं न प्रजानन्ति। नामेते भिक्खवे समणा वा ब्राह्मणा वा समणेषु वा समणसम्मता ब्राह्मणेषु वा ब्राह्मणसम्मता न चापनेते आयस्मन्तो सामयत्थं वा ब्रह्मयत्थं वा दिट्ठेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्य विहरन्ति। ये चाको केचि भिक्खवे समना वा ब्राह्मणा वा इदं दुःखन्ति यथा भूतं प्रजानन्ति। अयं दुःख समुदयोति यथा भूतं प्रजानन्ति। अयं दुःख निरोधोति यथा भूतं प्रजानन्ति।
अयं दुःखनिरोधगामिनी पटिपदाति यथा भूतं पजानन्ति ते खो मे भिक्खवे समणा वा ब्राह्मणा वा समणेषु चैव समणसम्मता ब्राह्मणेषु च ब्राह्मणसम्मता ते चापनायस्मन्तो सामय्यन्थञ्च ब्रह्मन्थञ्च दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसम्पज्य विहरन्तीति एतमर्थं भगवा अवोच तथेथं इति उच्यते ये दुःखं न प्रजानन्ति अतो दुःखस्य सम्भवं यत्र च सभ्यसो दुःखं अशेषं उपरुज्यते तं च मग्गं न जानन्ति दुःख उपशमगामिनं चेतो विमुक्तिहीना ते अथोपज्ञा विमुक्त्या अबभाते अंतक्रियाय ते वे जातिज रूपगा ये च दुःखं पजानन्ति अथो दुःखस्य सम्भवं यत्र च सभ्यसो दुःखं अशेषं उपरुज्यते तं च मग्गं पजानन्ति दुःख उपशमगामिनं चेतो विमुक्ति संपन्ना अथोपैया विमुक्त्या भब्बाते अंतक्रियाय नाते जातिजरूपगाति अयम्पि अथो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति भगवान ने ऐसा कहा, अनंत ने ऐसा कहा और मैंने सुना। भिक्षु जो श्रमण या ब्राह्मण यह दुख है इसको यथाभूत नहीं जानते, यह दुख का संग्रह है इसको यथाभूत नहीं जानते, यह दुख का निरोध है इसको यथाभूत नहीं जानते, यह दुख निरोध को ले जाने वाली मार्ग है इसको यथाभूत नहीं जानते। भिक्षु मैं उनको वास्तविक श्रमण या ब्राह्मण नहीं कहता हूँ, जो कि क्योंकि उन्होंने जो सामान्य और ब्राह्मण बनने का उद्देश्य था वो पूरा नहीं किया है, और ना ही उन्होंने अपने स्वयं अपने ज्ञान से दृष्टि अंतर्दृष्टि बनाई है, जिससे कि वो इस सत्य का साक्षात्कार कर सके, जिसके लिए कि उन्होंने उपसंपदा दी थी, जिसके लिए उन्होंने असैटिक लाइफ को एक्वायर किया था। लेकिन कुछ ऐसे भिक्षु और ब्राह्मण हैं जो सचमुच में यथाभूत जानते हैं कि यह दुख है, यह दुख का समुदय है, यह दुख का निरोध है, और जो दुख निरोध के ले जाने वाली मार्ग है, तो मैं उनको सच्चा ब्राह्मण सच्चा श्रवण कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से श्रवण या ब्राह्मण बनाए थे वो उद्देश्य पूरा कर लिया है और उसको अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं जान लिया है। भगवान ने ऐसा कहा और उसके बारे में आगे कहा, जो दुख को नहीं जानते और दुख के कारण नहीं जानते, और जो सारे नाना प्रकार के दुख कहाँ समाप्त होते हैं बगैर किसी शेष को नहीं जानते, और वो मार्ग को नहीं जानते जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, उनको न चित्त की मुक्ति होती है न प्रज्ञा से भी मुक्ति होती है, और क्योंकि वो इस तरह से आंसुओं का क्षय नहीं देख पाते तो जाति और जन्म के चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो लोग दुख को जानते हैं, दुख के कारण को जानते हैं और सभी दुखों को अंत समाप्त कर लेते हैं, वो इस मार्ग को ठीक से जानते हैं और उस जो कि दुख से शांत करने का मार्ग है, वो लोग चित्त की मुक्ति से संपन्न हो जाते हैं और प्रज्ञा मुक्ति से, और वो सारे आंसुओं को क्षय कर पाते हैं और वो दोबारा जन्म और मरण के चक्र में नहीं आते। ऐसा भी भगवान ने कहा और मैंने ये सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, there are ascetics and Brahmins who don't truly understand about suffering, its origin, its cessation, and the path.
I don't deem them as true ascetics and Brahmins. Those venerables don't realize the goal of life as an ascetic or Brahmin and don't live having realized it with their own insight. There are ascetics and Brahmins who truly understand about suffering, its origin, its cessation, and the path. I regard them as true ascetics and Brahmins. Those venerables realize the goal of life as an ascetic or Brahmin and having realized it with their own insight. The Buddha spoke this matter. On this it is said, there are those who don't understand suffering and suffering's cause, and where all suffering ceases with nothing left over. And they don't know the path that leads to the stilling of suffering. They lack the heart's release as well as release by wisdom, unable to make an end. They continue to be reborn and grow old. But there are those who understand suffering and suffering's cause, and where all suffering ceases with nothing left over. They understand the path that leads to stilling of suffering. They are endowed with heart's release as well as release by wisdom, able to make an end. They don't continue to be reborn and grow old. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. मेरा एक बार नीचे ले लो, वो चेता वाला है ना, चेता, हाँ ठीक। चेतो विमुक्तिहीनाते, इसको एक बार जरा फिर से समझा दीजिए थोड़ा। चेतो विमुक्तिहीनाते, क्योंकि अंग्रेजी में तो हार्ट का रिलीज, आई मिस्ड आई थिंक दिस। चित्त की विमुक्ति, चित्त की विमुक्ति, विमुक्ति, freedom of the mind from any defilement. It is interpreted जैसे हम कई बार many times अंग्रेजी में इसको माइंड और हार्ट, ये मैंने बहुत बार देखा है इसको ऐसे। It is essentially in Thai tradition also they use the same similarly. चित्त की विमुक्ति का मतलब क्या है कि हमारा जो ग्रंथियां हैं जो उनको बांध के रखती हैं वो हट गई है। कौन सी ग्रंथियां हैं जो बांध के रखती हैं? How the attachments to the world is keep us tied to it. So this is one of the interpretations. But there is another interpretation also which हमने पहले डिस्कस किया था। कई बार उसको freedom obtained by fourth jhana का भी चित्त कहा जाता है। उससे भी हमारे मन में इतनी शांति हो जाती है and there is a kind of freedom from sensitive impingements से असर नहीं पड़ता है। So there's two technical implications. Basically for us it is enough to know that it means freedom obtained through with the practice of jhanas and then using jhanas for complete liberation. कन्या मुक्ति कई लोग उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं केवल प्रज्ञा के आधार without attaining the jhanas, those who have attained freedom from wisdom part. This is one of the common interpretations. So here they are saying both the interpretation, both the things are missed. If you follow the eightfold path completely, then all the things will be done because the eightfold path includes samadhi, samadhi. Sir, but panya vimukti mein, they use the means which is panya, but cheto vimukti mein means nahi bataya. It is generally seen as using this deep samadhi, fourth jhana and above. So the mind is not getting trapped by the sense feeling.
Some of them say it is having reached fourth jhana and then they practice the panya and release very quickly, they get freed. Some interpret it in that manner. Difference. Some call Chetovritti as a temporary release, not a full release. So different people have different interpretations. Yes, make it. जी सर, ये दोनों वर्ड ना उसमें भी थे, भिक्खु बोधि की जो बुक हम पढ़ते थे। अभी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये दोनों पढ़े थे। फिर अभी मैंने पैरेलली सर्च भी करना शुरू किया, तो उसमें एक जगह लिखा है सर कि चेतो विमुक्ति अरहंत मग्ग में होती है और पय्या विमुक्ति अरहंत फल होता है। दैट्स व्हाट कंसंट्रेशन के थ्रू चेतो विमुक्ति है, और जब उससे भी ऊपर निकल जाएंगे तो पय्या विमुक्ति हो जाएगी। समाधि के थ्रू चेतो विमुक्ति होगी। Basically, there are different interpretations. It's not the last word of it. There's no last word. आई मीन इट्स लाइक सर, इट्स लाइक फेजेस है, गुड बेटर बेस्ट, और सबसे नीचे था याण विमुक्ति, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान सुन के हमें केवल अभी थ्योरेटिकली पता चल गया। वो याण विमुक्ति है शायद भिक्षुओं के लिए। That's hardly anything. पार्डन सर? That doesn't really last. सिर्फ सुनने से मुक्ति होना बहुत मुश्किल काम है, unless there's the insight is developed. Sanditthiko Kali. The basic part of Dhamma which is crucial is Pachattan Veditam Vinyum. To be able to see within oneself what is being taught. So just by teaching kya hua, वो exactly clear means. By teaching one, people have become fully liberated. Āsavakkhayasutta, Itivuttaka, they all get liberated just by listening to the teacher. But is that jnana vimukti or panya vimukti or cheto vimukti? But basically, we know that what vimukti means. So whatever means we adopt, different tradition, different people teach it differently. Some say this basically, in my understanding, basically the difference between two schools of thought. One which think jhanas are essential, prerequisite, others which think jhanas are not prerequisite. That is the fundamental difference. Baki sab to, they are not of much consequence. From the practical point of view, this is the difference. कुछ आचार्य मानते हैं कि एटलीस्ट प्रथम ज्ञान तो होना आवश्यक ही है। कुछ आचार्य कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, आपका अगर 4 समाधि भी है, रीजनेबल समाधि भी है, तो भी आप प्रज्ञा के माध्यम से मुक्त हो सकते। ये एक डिस्टिंक्शन है, अगर आप कह सकते। ओके सर, बट इसको क्या ऐसे समझना चाहिए कि ये गुड बेटर बेस्ट है, ज्ञान विमुक्ति, चेतो विमुक्ति और पन्या विमुक्ति, या फिर सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? I would say that my understanding and whatever little experience I have is that without samadhi, without samadhi, you're not going to get liberated. There's no doubt. And even Abhidhamma mentions that, and some of the Abhidhamma only clarifies that even if so-called Panjamukti people would say they don't practice jhanas, they cannot enter into the Sotapatti phala unless their samadhi is of that level. So this distinction of these two is really artificial according to Abhidhamma. Artificial in the sense that whether you have practiced jhanas and attained them before practicing this, or you attain it simultaneously. That's the. This is the understanding which appeals to me. Of course, different people have different interpretations, so I can't say I'm right and they're not right. There's no question of that. मेरे को अभी एग्जैक्टली वो सूत्र का नाम तो याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो फिर मैं मे बी आपसे फिर से डिस्कस करूंगा। उसमें कुछ ऐसा था कि दूसरे सेक्ट के लोग आते हैं और भगवान बुद्ध के जो सेखा भिक्खु होते हैं उनसे प्रश्न करते हैं कि आप लोग कैसे विमुक्त हो गए, या कैसे आप लोग अभ्यास हो, कैसे आप लोग इस प्रकार का क्लेम करते हो कि आप मुक्त है। तो उसमें वो भिक्खु बोलते हैं कि देखो, भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया है कि 5 खंड है और उसमें
आप इंटरेक्ट करते ही हो और उससे इतना वेदना तो जागती है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया है कि ये तो प्रकृति का खेल है और ये हम जान गए हैं, थ्योरेटिकली समझ गए हैं, तो इसलिए हम यान विमुक्त हो गए हैं। लेकिन इसके आगे अभी हम उसको जीवन में उतार रहे हैं, तो अभी हमें आगे की विमुक्ति चाहिए। कुछ ऐसा करके उस सूत्र में था, उन्होंने ये बोला कि इतना हमें शास्त्र ने समझा दिया है, दैट्स व्हाई वी आर इनटू दिस। एंड देन दे गो टू बुद्धा एंड अभी मुझे पूरा याद नहीं है, तो इफ आई गेट द सुत्ता आई विल लेट यू नो। बिकॉज सेम वी आर डूइंग, लाइक हम अभ्यास कर रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया है कि ये 5 खंड हैं और ये चीजें हो रही है, बट वो फिर भी चूक रहे हैं हम तो Yeah, सो कॉल्ड मेंटली। they're practicing. No? You're not attained. You can't say ज्ञान विमुक्त हो गए हैं. I cannot say that. I cannot say that. हम विमुक्त नहीं हुए हैं. अंडरस्टैंड. नहीं तो हम कॉम्प्लिसेंसी में आ जाएंगे. उसका एक ही मतलब है. विमुक्त की मतलब में कोई डिफरेंस नहीं. In my understanding, it means straight, clear. बट दिस इज कन्विंसिंग, लाइक जैसे कल येलो पेज में भी उन्होंने विचिकित्सा की बात की थी ना, सो यान विमुक्ति को अगर मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो दिस इज कन्विंसिंग द कि ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना कि It's 5 not खंड good to. इंटरेक्शन हो रहे My submission is it's not good to use the word vimukti in such a light manner. हैं। You should never do that. It can lead you to wrong conclusions. पता नहीं कब जाके मन उसको गलत इंटरप्रेट करें. शब्दों को उसको गरिमा बना के रखनी चाहिए. विमुक्ति शब्द की गरिमा बना के रखनी चाहिए. चेतो विमुक्ति is not a minor thing. If you say the issue of ज्ञान विमुक्ति is described like that, you have to study what is the meaning. मैंने मुझे याद नहीं है इस तरह का, इस समय मुझे याद नहीं. आप अगर सूत्र भेजेंगे then I'll study it. हाँ हाँ सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। पिछले सूत्र में भगवान ने मूर्खों का जिक्र किया है कि मूर्ख लोग ये नहीं समझ सकते. तो I was wondering, is there a quality by which these मूर्ख लोग are identified who cannot possibly follow this path? Whether, for example, हम लोग तो उन मूर्खों में नहीं है. ये क्वेश्चन कभी कभी दिमाग में आता है. I hope so. वैसे धर साहब ये बात सुरेंद्र जी की सही है ना कि कई बार ऐसा लगता है ना when reading the suttas that in some senses it is, and I'm using the word carefully, it is somewhat an exclusive, क्या कहेंगे आप उसको, path, isn't it? कई बार ऐसा लगा, and we've discussed it once or twice, that it does assume a certain base level of mental capabilities beyond which it's possible to begin to comprehend things. I mean, which is not to say that below that base level you cannot begin, but to really truly begin to comprehend it seems to assume a certain mental capacities. ऐसा कई बार लगता है, नहीं? Don't you feel? Yeah, actually जो धर्म के गुण बताए गए उसका अंत में शब्द यूज किया गया ना, तच्चतंग वेदितव्यो विन्योहि. विन्योहि मीन्स नॉलेजेबल पीपल, जो समझदार लोग हैं उनके द्वारा ये अपने भीतर अनुभव किया जा सकता. इस वन स्टेटमेंट. एंड देयर आर suttas are like चूलपंथिका sutta. You just don't understand it. And yet the teacher made him see in a different manner. He changed his, he brought in to his knowledge a
कपड़ा दे के उसको ऐसे ऐसे करते रहो, देखते रहो. And with that, he raised his samadhi level and then understanding impermanence. And just that, जो उसके blockage थी, वो टूट गई. Obviously, one can say that he had a very strong practice of the past lives, which had got obstructed because of some strong karma. That's how it is explained. It can be easily understood. किसी ने बहुत साधना की हुई है, लेकिन कुछ एक ऐसा काम भी किया जिससे कि उसकी जो उसका ज्ञान था वो चला गया, और फिर एक टीचर ने उसको उस समय मदद की और वो अज्ञान कट गया. So this kind of stories we find it in very all traditions. The person is got great knowledge, great wisdom, and suddenly forgets everything. And then because of किसी का शाप हो गया या किसी ने बेसिकली कुछ दुष्कर्म किया, गलत काम किया, जिसके कारण जिसका फल इस तरह से लाया कि उसकी अपनी विद्या ही समाप्त भूल ही गया वो. And then if somebody helps him, he can get over that. So both the things are there, but it's लगता तो है some requirement of application of mind and some element of humility, some element of willingness to learn. That's absolutely prerequisite. Because one can easily reject the teaching. There's no point out here. This teaching is of such a kind. It's not leading you in the direction in which the world is going. So most of the world will tend to reject it, and it's true. Also, very difficult qualities like surrender. I forget the Pali. I remember 1 year ago you were going on that theme for a long time. So that do seem to be the bar seems to be super high even to get going basically. To admonish आता है ना अपने मंगल सूत्र में भी आता है, सोच सत्तु, सोच सत्ता. This is a very difficult quality in modern times when everybody is an individual who wants to assert his individuality. Even a small child says, oh, I'm not going to accept it. Why? What? How? Everywhere you can't explain why to a 10-year-old child. So then that we have to wait for the time to arise, conditions to change, so that the person is more amenable to listening. This we are seeing in our own life, in our own families, friends. How many of my college friends, for example, we have a quite a good group we meet. But how many of them are able to understand what I am saying? I don't say them, but they know what I am saying through various means. So it's not easy. And they're all very intelligent. They're not fools in the world of, in the sansaric sense. They're excelled in their fields and all. But they could figure out. Very great scientists, great engineers. Doesn't appeal. सर यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं. एक तो जिसे कह सकते हैं कि हम द लेवल ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, भाई मूर्ख जिसको, जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा कि बेसिक लेवल ऑफ आपकी फैकल्टी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड. एंड सेकंड इज विच यू जस्ट मेंशन्ड कि आपकी इंटेलिजेंस तो बहुत है, बट यू आर नॉट काइंड ऑफ सीइंग थ्रू जो लॉजिक आ रहा है. Suffering. Basically, one can always say कि suffering है तो happiness भी तो है यार, क्यों पीछे पड़ गए suffering. किसी ने देखा है कि जन्म है और पुनर्जन्म है. Such a nice life. अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की. देखो आज I am so and so executive director of this company or that company, and what the hell are you talking about? दुखा है, तुम नेगेटिव हो गए हो यार. I can understand तुम्हारे जीवन में थोड़ी परेशानी. That's fine. So keep going.
So how do we explain it to someone who is not willing to be ready to look at rebirth? No, that's one of these things, but we can try to explain the fact of suffering here itself. That we can start from there and point out the real cause of suffering, not the apparent cause. So if you find out the real cause of suffering, then that takes you in that direction. नॉर्मली क्या होता है कि हम सफरिंग को और उसके कारण वे बात कर रहे हैं कि समझ नहीं पाते, क्या नहीं समझ पाते, दुख को और दुख के कारण को नहीं समझ पाते या दुख के निवारण को समझ पाते. नॉर्मली हमारा जो टेंडेंसी रही बिफोर गेटिंग exposed to Dhamma or any kind of spirituality, or for most of our friends and viewers, their understanding of suffering is it's caused by surroundings, isn't it? So they find a solution there. Now to tell them that that is an apparent cause and real cause is inside is quite tough. And they may or may not understand it. So तो क्या वो मूर्ख हैं? वो जो मूर्ख वर्ड यूज किया है जिनको in this spiritual context, yes. If one is not able to, I mean, that's why we are qualifying that. That's why I mentioned about my friends. They're extremely well intelligent people who have done great things for the country, and so on. But they don't appreciate it. ठीक है यार. That's the reason why I asked that was we understand intellectually. We can also see the truth of things when we contemplate and see things for ourselves. But I think we're not able to practice it properly because our development of the path remains very, very shoddy. And so when that happens, sometimes there are doubts that arise in your mind, whether you are really. Inability to practice after having understood is basically a shortcoming of virya, shortcoming of proper enthusiasm. So let's say those 4 iddhipadas are not properly developed. Because of that, we are not able to practice strongly. But we understand the need for practice. That's the fundamental problem is that people just don't understand that practice is needed. They say, temporarily कह रहे हैं सांस को देख लो उससे मन शांत हो जाएगा. चल देख लो यार. I remember we used to discuss it in Vaishnava courses after that because I has become a so-called office in charge of the North India. Discuss यार कितने लोग आते हैं एक शिविर में आएंगे और फिर 10% of the people will come again. ठीक है, हो गया, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा रहा, खत्म हो गया, finished. Because some relief was obtained and circumstances changed, and therefore there's no more. So that issue of understanding Four Noble Truths, obviously it didn't go in. What went in was कि सांस को देखने से मन शांत होता है, खुश हो जाता है, ऐसा ऐसा कर लो, ये शरीर को देख लो, ये कर लो, इससे थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है. It's better than doing other possibilities. But then you're not really able to understand the Dhamma in that sense. You're not really understood suffering in the true sense of the term. That's why the emphasis में किया जा रहा है, understanding suffering, understanding cause of suffering and of suffering, and the path. So that inability to understand that would be called as in this domain. That's how I am likely to look at foolishness. Sir, but if we look at from the other
other side, Buddha also has said ki what I understood is so complex that only very few people would be able to understand. And then Brahma Sampati comes and says कि जिनकी आंखों में थोड़ी सी धूल है उनको समझा दो. तो on one level it seems like it's a very difficult thing to understand. और दूसरे लेवल पे अभी हमने पढ़ा कि जो मूर्ख होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, which looks like a basic understanding, basic level of intelligence तो होनी चाहिए. Intelligence not in the sense of being good in solving differential equations. That is not intelligence. We're not talking about that intelligence. Or being good in coding programs. That doesn't help. इंटेलिजेंस शब्द का मतलब अलग अलग हो जाता है ना, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ. There may be brilliant people who understand artificial intelligence, but they will remain artificial. The fact is, this understanding this is apparently simple thing, that there is suffering. It looks so simple. And there is a cause of suffering. That also looks so simple. But there's a subtle nuance. So then why does Buddha calls it that it is, what I've understood is so difficult to understand? Yeah, because of this reason. This is the reason, of course. It is subtle. He doesn't say difficult, it's just subtle. It doesn't use the word difficult. It is so subtle. And people, and see, if you read that whole stuff, and people were so much engaged in craving and seeking pleasures, how will they understand it? That's what this is. You can put it in the sense of highly complex or difficult. No? It's subtle. It is all around, and yet it's not possible, easy to see it around. Maybe it's too subtle to be noticed. Yeah. Because things like air, you don't notice it. Only when you live in Delhi, you notice there is something called air. You can actually see it. Because Delhi's air is not set up. But here, for example, I am staying in a very secluded place. Pretty clear. You don't feel air unless there is storm. So आप जो fools जो जिस तरह की ignorance की आप fools के लिए बात कर रहे हो, और जो एक normal ignorance है, आप उसको differentiate कर रहे हो, क्योंकि because Buddha, my understanding, Buddha has given Dhamma to everyone. He has never stopped. And the very fact that we are born human, there is a possibility of removing ignorance. So then, I mean, to have this kind of view, because the whole path is about your understanding of Dhamma, and when you look out and see in others, then it is just a matter of, you will get frustration only. But still, even, I mean, to see that in that fashion, to see outside, bahirda karke dekhna ki agar koshish kar rahe hain hum, to isn't it our ego will have thoda sa, see, he is not understanding, this is the path, or some firmness, ऐसा attitude नहीं आ सकता क्या इससे, मतलब there is a chance. अगर मैं डेवलप नहीं तो आया, इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग करना तभी करनी चाहिए जब आपको कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाए. We'll get frustrated. इतना एफर्ट कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा. One gets frustrated or he gets egotistic. Oh, मुझे समझ में आ गया, इनको तो समझ ही नहीं आता. Those are all people who are walking on the path who have not understood the path properly. अगर मुझे सफरिंग का कॉज मालूम है तो मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता कि दूसरे लोग जो हैं वो मुझसे हीन है और मैं ऊंचा हूँ. Then we have not understood them. But the fact, this is the fact. The basic ingredient is that only. Yes, there is a fact. Yet there is a fact. Buddha is saying, I'm not saying. He's saying you are fools. I didn't say. I'm only explaining what he's saying.
Buddha is saying that fools You don't appreciate understand. that one also, and you are appreciating this also. Yeah, that is it. That is Buddha's teaching. All spiritual teaching is full of paradox. Apparently, they are opposite to each other. इसलिए कहा जाता है ना, the truth, real truth is that of which the opposite is also true. That में से क्या बात कर रहे हैं? Philosophy की बात है. But it's hard fact. They are the ultimate truths are of that nature. There's nothing opposite to it. They embrace everything. So on a conventional level, there are fools who just don't understand that there is suffering, and we see them. So now, what is my attitude to them? Compassion, not anger. I keep trying, but I find that I cannot do that. So I give up. So you say somebody else more competent, यार आप समझा दें. कई बार ये आस्था का जो प्रश्न है ना, ये भी एक बहुत बड़ी एक बाधा हो जाती है इंसान को विजडम की तरफ जाने में. आस्था प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि श्रद्धा जिसको कहते हैं हम, कि श्रद्धा जो है, तभी श्रद्धा के ऊपर काफी बल दिया गया है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक पूरी तरह से जानकारी भी नहीं हो पाती. ऐसा देखने में आया है. अब किसी भी ऐसे लोग में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धर्म के प्रति बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है उनकी, लेकिन जब आप उनसे ऐसी बात करते हैं जैसे अभी आपने बताया, तो वो they don't like it. तो अलग-अलग मान्यताएं जो है, में श्रद्धा शब्द का अर्थ अलग-अलग लिया गया है. इसलिए प्रॉब्लम होती है. भगवान की टीचिंग में श्रद्धा is always tentative faith, because it is the way we start. और आज को शाम को मुझे हवाई जहाज में बैठना है, फेथ की ड्राइव पायलट जो है हवाई जहाज चलाना जानता है, इसमें बैठूंगा कैसे उसमें? है कि नहीं? मैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, जानता नहीं है, कहेगा मेरे को, कहेगा आया तो चला. So I know that this person is going to take me. I'm talking about brahmachari. Exactly same thing applies to spiritual teaching also. We have studied life of Buddha. We have tried other things. I have tried other things and realized the limitations. मुझे लगा यार वो उन्होंने गोइंका जी ने प्रवचन दिया था, ये अच्छा है. तुम्हारा जब इसको भी लगता है, वो कह रहे थे कि शायद maybe it's right. Let me try it out. But there was a tentative faith. It was just tentative. And then I practiced and found यार लगता है ठीक है, कुछ करके और देखो, अभी वेरीफाई कर लो. Don't accept it immediately. Practice for a few years and then you know whether it works. And yeah, it works. Then you will practice more and see यहाँ पे जो है यहीं पे अटक जाते हैं. Then you change. That's how it works. That's how we evolve. अब जो मूर्ख की परिभाषा है ना, मूर्ख की परिभाषा जैसे one who is not understanding the Buddha's teachings. No, that's not it. Buddha's teaching is vast. One who is not understanding, ऐसा नहीं कहा उन्होंने. One who is not understanding suffering. उसको दुख हो रहा है और फिर भी समझ नहीं आ रही उसको यार. Fine. That is the point. He's not just understanding suffering. Yeah. He's not trying to understand suffering. He's not trying to understand the cause of suffering. Right. He's catching hold of people in the world. कि ये तुम मेरे दुख का कारण हो, and creating more suffering. Yeah. So he's not able to understand. That's the fundamental point. It looks so simple, but so difficult for people to understand. समझ नहीं पाते. आप कहते हो. इसीलिए वो भटकते हैं ना, मतलब जो इधर उधर भट जाना, कि वो हाथ में ये हो जाएगा, उधर ये करने से ये हो जाएगा, मेरा दुख कम हो जाएगा. हम भी भटके हैं ना, इतना सारा भटकते हैं. We have also done the same thing. So we have compassion. मैं भी बहुत हुआ. That's okay. Sir, when we talk about inability to practice in spite of understanding, और जो faith sustain नहीं कर पाते हैं, तो मैंने ये कई बार ऐसे देखा हुआ है, like people want to have some turning point in life to sustain it.
जनरली लाइक बिकॉज वो छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस नहीं समझते हैं, कुछ बड़ा एक्सपीरियंस आता है तो ही ऐसे लगता है कि यस वी हैव अंडरस्टूड एंड नाउ वी हैव दिस फेथ टू walk towards it, like not understanding in a broader sense ki anything and everything is suffering, like looking for this turning point also is kind of a suffering which is creating unable to sustain on the path as such. कई बार ऐसे लगता है because people want the turning point, तो वो एक श्रद्धा एक बन जाता है, अटल बन जाता है कि मुझे फर्क पड़ा है, so I'm like distributing this dhamma, but many people doesn't come across that kind of an experience when they are practicing it as such. Maybe I can't say that really. To me, the reason is that we're searching for a temporary solution. We're searching for stress relief, not for suffering, standing suffering. That's the thing. I'm focusing on this this very sutta which हम पढ़ रहे हैं. We are not understanding suffering. We want to get rid of it. तो वो बड़ा सफरिंग में भी किसी को बहुत ज्यादा एकदम ही टर्निंग पॉइंट मिल जाता है ना सर, तो वहां पर बड़े सफरिंग के बाद बड़े सफरिंग के बाद सब आदमी सब लोग इस पाथ पे चलेंगे, कोई गारंटी नहीं है. No. It's not that everybody who has a massive suffering will follow the teaching of the Buddha. No, it doesn't work that way. The reasons why one follows one particular path or the other are very complex. It's related to our past karma, it's related to our past practices. So you can't really find out exactly what is going on. कि कोई आदमी शिविर में आता है और फिर नहीं आता, तो we can't find out exact reason for that. We can only guess. We can, as if I'm a teacher, I will try to find out the मेरी teaching which problem I can. That's all I can do. I can't do more than that. Isn't it? Can I make my teaching more clear? Can I try to understand, explain, and first explain people more clearly? Because to worry about that also foolishness on our part. लोग क्यों नहीं आ रहे हमारे सेंटर में, हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? Partly, if there's some deficiency on my part as a person who is interested in doing so, then I can look into it. More than that, I can't do. Life is too complex. Karma का खेल बड़ा complex है. We can't figure it. Many people. Sir, I will be very brief. Hello. Hello, sir. Should I say something, sir? हाँ बोलिए ना. एक तो मैं सर ये कह रहा था, बहुत ही परेशानियों से गुजर करके और काफी लिटरेचर, अलग अलग लिटरेचर पढ़ने के बाद में मैं इस नतीजे पर आया हूँ, दिस इज द ओनली ट्रू पाथ. ओनली थिंग इज दैट दिस हैज टू बी डन इन एक्सपीरियंस्ड सेल्फ. दिस इज माय एक्सपीरियंस, and I have read other articles, so many things, other books also, but this is only the true path to be experienced and to be done. This is the first thing. The second thing, just you said there is no absolute truth. इसमें मेरे को थोड़ा सा ये था कि जैसे things changes, this is truth. Ice is cold, this is truth. Fire is hot, this is truth. Isn't it? No, did I say that there is no absolute truth? ऐसा मैंने कहा क्या? मुझे ख्याल नहीं है इसमें कुछ कहा. I said there are ultimate truths and there are conventional truths. Anyway, that's what. आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, but ऐसा अगर मैंने कहा है तो गलत कहा है. कोई absolute truth नहीं. आपने खुद ही उदाहरण दिए, ठीक. Conventional truth basically changes. I agree, sir. Thank you. Thank you.
दीपक, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीपक, आवाज सुनाई दे रही? मैं म्यूट पे था, आई एम सॉरी। आपने ना बहुत सारे बसना कोर्सेज में आपने कंडक्ट किए हैं, लेकिन मेरा तो एक्सपोजर बहुत कम रहा उस हिसाब से। लेकिन मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे अभी गीता ने कहा कि कुछ लोगों को आप जो मर्जी कह लो अपील नहीं करेगा, पर कुछ लोगों को तो एक हल्का सा ही कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाए तो दौड़ते आते हैं। तो ऑफ कोर्स उसका एग्जांपल मैं दूं तो आपको शायद सबको इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा ये पॉइंट रजिस्टर हुआ। एक बार विपस्सना कोर्स में मैं सेवा कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस, आपको पता है बहुत कम मुसलमान आते हैं, मुस्लिम जो है विपस्सना कोर्स में बहुत ही रेयर आते हैं। तो एक बड़ा ही अमीर रियली रिच ईरानियन केम, उसका ऑयल इंडस्ट्री में काफी उसका था, असेट्स थे उसके। तो मैंने सोचा तुझे क्या पड़ी है भाई, तू विपस्सना कोर्स में आ गया? कहता है जी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, जस्ट बाय रीडिंग ऑन इंटरनेट he came flying to India and joined the course। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन कई लोगों को आप एक्सप्लेन करते रहो तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन फॉल्स फ्लैट। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों के जो ये मार्ग है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें शॉर्टकट जो आप हम पढ़ते हैं कि अथक परिश्रम करना ही पड़ेगा, सती और प्रज्ञा के साथ हमें अथक परिश्रम करना ही पड़ेगा। जहां हमारी कर्म हमें ले जाएंगे वो ठीक है, लेकिन हमें तो चलना पड़ेगा। अथक परिश्रम में कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस इज ऑल आई वांट टू सबमिट। So we can conclude. Request Vanteji, it's only 8:30. Give us blessings, detailed, short, whatever you like. May we all be able to come out of the criteria of the category of the blind into little dust. Araham Samma Sambuddho Bhava Buddham Bhagavantam Namaskari Swahato Bhagavata Dhammo Namassami Patipanno Bhagavato Āsavakkhayasutta Sangham Namami. Respects to Vanteji. Thanks, sir. Thanks. Thank you. Thank you.